Admin recording, please. Welcome, ladies and gentlemen. Welcome to 12th session of Gyanotsava, 12th webinar of Gyanotsava. Webinar we have been conducting for a long time. This is an endeavor to produce and disseminate research on Bihar, to create a new kind of narrative on Bihar. We have been struggling to gather scholars on this platform. We have had discussion on various aspects of identity politics and image formation about Bihar. But today, we have 4 young scholars who are discussing economy of Bihar. In today's world, earth is more important than dharma, kam and moksha. Therefore, this discussion is very important. We have 4 scholars: Krishna Ram, who is assistant professor, Ambedkar University, Delhi. We have Manish Kumar, who is assistant professor in Delhi School of Economics, Delhi University. We have Santosh Verma, Dr. Santosh Verma, who is senior policy analyst at CBGA. And we have Avnindranath Thakur, who is associate professor of Jindal University, UP Jindal University. We are going to hand over the mic directly to Avnindraji. Avnindraji will conduct this discussion. He will moderate and he will conduct this discussion on this topic of challenges of inclusive development of Bihar. Welcome, Avnindraji, and welcome you all. Please go ahead with your proceedings. Thank you, Pradeepji. So, as far as inclusive development in Bihar is concerned, it's very important because if we talk about the growth of Bihar, in fact, it has been almost 17 or 18 years when Bihar started a higher growth trajectory. So, in fact, there are 2 very important things. One, people debated about whether that growth numbers are right or wrong. Those debates were there when, during the first 5-7 years. And then there's a consensus that, okay, in spite of some methodological issues, Bihar is actually rising at a particular rate. So that rate is relatively higher. So now second question, which is more important than the growth numbers, is that if Bihar has already grown for almost 18 years, so what had been the impact of that growth on common people? So how Bihar actually transformed from a poor economy to a kind of, developing state in the country, firstly, and secondly, how far that growth has been inclusive in nature. So in fact, some says that Bihar, started from a very low base effect. So major part of that growth is primarily because of the fact that Bihar's per capita income or Bihar's state domestic product was very low. That's why it was easier to, grow at a relatively rapid rate. But still, even if we assume that Bihar started from a very low base, still 17-18 years are enough to to reflect some of the major changes in the economy, firstly. And secondly, what we expect from the growth actually. So 17 or 18 years of high rate of growth, what we expect, what is the meaning of inclusive growth? So if we talk about inclusive growth, means that the growth is reaching to each and every section of the society. And for Bihar particularly, it is important because Bihar society is embedded in socio-economic discrimination for long. Even it inherited a kind of exclusion and discriminations even from the colonial period. So it was under Jamindari system and its political structure remained like that. So, it's not very easy to have a spread over of growth to all sections of the society. So now there are a few questions which probably we will address in today's discussion. I will not take much time because 3 speakers are already there. So in fact, even after having a high growth rate for 17-18 years, to what extent Bihar actually witnessed structural transformation of its economy, both in terms of output or employment, and secondly, in terms of how far the marginal section of the state, basically whether it's in terms of caste, class, or maybe minorities, to what extent they actually got benefit of this growth.
process it, because there's a lots of debate about whether growth is naturally inclusive or not. But that debate is definitely now won over by the group of economists, which says that no, growth is not naturally inclusive. It has to be made inclusive. So now it's very important to understand to what extent Bihar actually made that growth inclusive in nature. So we have three speakers. So I think this is a overall perspective. So I think we have three very important speakers, academicians who are working on Bihar, particularly this, the transition of Bihar's economy. So we can have a discussion. So okay, so what should we? Maybe Krishna, you can start. Yes. Okay, so we'll go by the same sequence which is there. So let's have a 15 minutes of discussion for the first round, 15, 15, 15. And we collect questions, and then after that we can have question answer sessions. Of course, I will moderate that. Is that okay, Pradeep ji? Yes. So Fine. So yeah, I would request all of you to stick to 15 minutes so that we can have this is a very debated topic. Everybody is very much interested in Bihar's economic dynamics. So it's always better to engage with them, engage with those questions. Okay, so let's start the discussion. Maybe 15 minutes for each of you, and then we'll go for a wider discussion in this platform. Okay. So Krishna, you can start. Yeah, I can. So can you allow me sharing my screen, friend? Or admin? Screen share. Yeah. So is my screen visible to you all? Yes. Yes, it is. So thank you all. बस एक रिक्वेस्ट, जब आप स्टार्ट करने से पहले, चूंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये इकोनॉमिस्ट का प्लेटफॉर्म नहीं है, सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्पीकर्स डोंट अज्यूम एनी that so be in a very narrative should be in a common language. So मेरा रिक्वेस्ट है जितना कॉमन हो सके, जितने इंटरडिसिप्लिनरी लोग समझ पाए चीजों को, वो डिबेट को उस तरह से रखना है. So maybe you can use both the languages, terms जितना सिंपल हो सके उतना होगा तो बेहतर होगा. Okay, that's I will try to use both language, both Hindi and English. Okay, so let me start with the English, and probably when I go through my presentation, I will move on to Hindi also. Okay, so as everybody know about the Bihar, okay, since we all belong from Bihar only. Okay, Amrin just talked about the economic growth and also talked about the inclusive development. Okay, so we also know society is divided into various social group. Okay, and if you divide society and then broadly we can divide between SC, ST, OBC and others. Okay. So SC primarily called Dalit, okay, and we also know the history of Dalits. In century, they are facing discrimination. They deprived from education, health. Only in a British, sometimes in a British era, they are allowed to have an education and accumulation and to accumulate wealth. So and within the topic of challenges of inclusive development in Bihar, my presentation will be on an inquiry of causes and persistence of poverty among Dalits in Bihar. So in my presentation, I will present some fact and figures, okay, and try to build an hypothesis or make an argument why there is a persistence of poverty among Dalits in Bihar. So as you can see in my first table, so the first table mainly talked about the overall poverty levels at all India level and in Bihar. And you can also see in the first column, there are various social categories. So if I read again the social category, then ST, SC, NH OBC stand here, non-Hindu OBC,
HOBC is Hindu OBC, SCH is high caste Hindu, then all Hindu, all Muslim, and all. So these are the some broader social classifications, okay, of the social category. And if I start reading some poverty levels, okay, then you can see from this table, okay, at all India, overall there are 22% people are poor, okay, and if you check the figure for SC, then the figure come to 29.4%. But for Bihar, if you check the corresponding figure, then the overall level of poverty is 34.1%. That includes both rural and urban area. And for Dalit, it is coming to 51%. That means that half of the Dalits who are living in Bihar, they are poor, as per the official estimates of poverty line. So I'm using official because these estimates are the Rangarajan committee estimates, and though government didn't accept the Rangarajan committee estimate, but you can colloquially use even that as an official estimate. So this figure are based on the Rangarajan committee estimates. So half of the Dalits in Bihar are poor. And if you compare with the high cost Hindu high caste people, so my logic of making a comparison of Dalit and Hindu caste high people derived from the literature of inequality. So whenever you talked about the inequality, we compare 10 to bottom 50%, 1 to bottom 50%. So we also know that all over India, high caste Hindu are the people who are doing well in almost all development indicators. So I'm just using their figure as a benchmark and comparing the performance of other social category compared to them. So since today lecture is going to focus on Dalit only, so my emphasis will be focusing on position of Dalit as compared to the high caste Hindu people. So as you can see, even in Bihar, half of the Dalits are poor as compared to 1/3 of high caste Hindu people. So, of course, so poverty, when we measure poverty, so in that we include only income dimension of poverty. But when we look the other dimension of poverty, then we quickly found that Dalit are the one who are most deprived. So I'm going to present here some of those indicators and figures of some of those indicators. So as you can see, if you look the monthly per capita expenditure, then again you can see that Dalit are the one who on average is spending less than the high caste Hindu, and their spending level is even less than the national average. Okay, so in Bihar, in case of Bihar, we can see that Dalit on average are spending 914 rupees per person per month, and for Bihar average it is 1091 rupees. Of course, all India average is much higher than the Bihar. Since Bihar is a poor country, so we can expect that if you compare Bihar with the all India or Bihar even with the all India level, so Bihar positions lie below the all India level. So similarly, if you look the other indicators, okay, which one is the per capita calorie consumptions, and the logic of taking a per capita calorie consumption is here. As you have seen in the previous slide, okay, on average, Dalit are spending much less than the high caste Hindu people. Then, of course, if they are spending less, they are having a less command over food and non-food commodities. So if you compare their spending on food commodity and also looking at how much calorie, because of course we consume food to get a nutrient that includes protein, fat, calorie, and other micronutrients. So ones who are spending less, they have less command over food and non-food commodity. And if you can particularly talk about the food commodity, so consequently they have less command over on the calorie consumption.
So again, you can see here, since the Dalits are having a less command, or having a less spending, less command over the food commodity. So consequently, they are consuming lesser calorie as compared to the other category people. And this one is the true for the all India level and also true for the Bihar. So if you talked about the figure of Bihar only, then again for Dalit, it is coming out 940 rupees, considering both rural and urban area. And if I bifurcate here for rural and urban area, then for rural area, it is coming 1932 and urban 2037. And for all Bihar, for rural area, it is 2049 and 2072. And if you compare the calorie benchmark given by the Rangrajan Committee estimates of poverty, then the Rangrajan Committee suggested to have around 2100 calorie for the rural area and 2050 kilocalorie per person per day for the urban area. So with comparison to that, if you check, if you see the overall figure of Bihar, then we find that okay, though Bihar is overall figure of calorie consumption in Bihar is less than the even that norm, but not much less. But for the Dalit, it is of course significantly less than the required calorie norms. Okay, and since Dalit are consuming less calorie, less nutrients, so they are more prone to the disease. And if they are more prone to the disease, they are frequently ill, and when they frequently ill, they need to consult the doctor frequently. Then there would be high pocket expenditure, any out-of-pocket health expenditure, and it is not only that, since they are not consuming calorie enough. Okay, so that affects their health and that affects their overall productivity. And if you look the sum of the health indicator in this regard, then again, you can find that Dalit positions are worse than any other category, whether that is the OBC, or Hindu OBC, non-Hindu OBC, and of course, or any other, of course, barring scheduled caste people. So if you take some health indicator, the one is the stunted, then again we can see that Dalit children are more stunted than the non-Dalit children's. Similarly, if you look onto the underweight, then again we can find that Dalit children are more underweight than the other category. You can see here around half of the Dalit children are stunted and underweight. The same is true for the child mortality indicators. Okay, whether you can take a neonatal mortality indicator, infant mortality indicator, child mortality, under 5 rate mortality. So in almost in all mortality indicator, you can find that Dalit children health situations are worse than the Hindu OBC and high caste Hindu people. So of course, a question arises: what are the reasons of poverty and deprivations among Dalit in India? Okay, so there are several regions of improvement among Dalit in India. Okay, some of them are already captured in a secondary literatures. Okay, some are yet to be captured. Okay, so here I'm going to mention few of those which I found important, and among those one is the low access to income generating assets such as land and other assets. Then there is a low employment. Then there is a even though the Dalit get employment, they get low wages. They get low wage employment because of their low educations and also the caste discrimination in the labor market. Okay, so in this lecture, I'm going to provide some empirical evidence on some of the indicators that I talked about. So let's start with the distribution of land across caste in Bihar. So here you can find, as per this distribution of land, so I divided, I make a category of landless, marginal, small, semi-medium, medium, and large. You already having a two expert, Manish and Santosh. They are expert in
in agriculture area. So probably they will tell better about the land distribution and others. But my definition of landless is not my definition. I read one paper of Sandeep long back, and also one paper of Vikas Rao, where Vikas Rao mainly defined landlessness excluding homestead land. So using the same definition of landlessness, definitions are given here in the comment section. So I'm not going to make emphasis on that. But if you see the landlessness figure, so that is again higher in Dalits than the any other category. So for Bihar specifically, you can see that here around 70% of Dalits are landless, okay, as compared to 25.58% of high caste Hindu. If you add the marginal figure, then together it is coming around 99. And for SC category also, it is SCH category also, it is going to be very high. But for SC, we can say that 99% of the Dalits in Bihar either are landless or having a marginal land. So marginal land holding when on less than and greater than 0.002 and less than 1 hectare of land. And landlessness defined here if the land holding is less than 0.002 hectare. So it's an SSO definition. Okay. So similarly, if you since Dalits do not have cultivable land, okay, or if they have a land, they are having a very small land, okay, on which their subsistence is difficult. So of course they work as a rural laborer or casual laborer. So if you look the distribution of household as per their main source of livelihood across caste in Bihar, then again you can see that Dalits are mainly working as a casual labor in agriculture or casual labor in a non-agriculture worker. And this figure is comparatively high as compared to the high caste Hindu, both at the all India level and in the Bihar. So in Bihar, you can see here around 50% of Dalits are working as a casual labor or casual labor either in agriculture sector or in a non-agriculture sector. And the same is true for the urban area. So in urban area, again, you can see here around 35% of Dalits are working, 26% of Dalits are working as a casual labor. The rest 8% one is in the other category. So if you look at some other labor market indicator, which mainly belong to the employment, unemployment, and so if you go with the WPR, which one is the workforce participation rate, then we can find that around 51.3% is the rate of workforce participation rate for the Dalits, okay, at all India level. For Bihar, it is just 39.1%. Labor force participation figure is 44.8% for the Bihar. So labor force participation rate, you can understand is labor which are available for the work, and workforce participation rate is those who are working. So you can see here there is around 48.8% of and proportion of Dalits who are available for the work, but of course not all are getting work. And if you see what proportion of them are getting work, then that figure is 39.1% only. Okay, as compared to the all India. So all Bihar average is 37.0%, and for the WPR and for the LFPR, it is 41.3%. Unemployment rate in Bihar is high, and it is high in both Dalits and non-Dalits. Okay, and
why unemployment rate is high in Bihar, that required a separate discussion. Okay, so I'm just putting some comparative figures of employment and unemployment of Dalits and high caste Hindu people. Okay. Sorry. Yeah. So, those are the figures for employment and unemployment. But we also know that 91% of workers, around 91% of the workers, work in an informal sector. And this is the all India figure. And these are the workers who are most vulnerable, and probably majority of the informal workers are poor. So if you focus our distributions on informal workers only, just to understand the poverty situations better, then in that, if you look the distribution of informal workers according to their work status for Bihar, then we can find out that around 44%, Dalits in Bihar working as a casual labor, and for the high caste Hindu people, it is only 3.76%. So you can also check this one in contrast to the self-employed one account worker, which we consider relatively a better kind of work, and better, not kind of work, both in the pay and working condition. Then in that you can see that around 15.95% of worker work as a self-employed on account worker, and around the same figure is for the high caste Hindu people. So if you look the wage earning, then again you find a similar situation. Dalit on average are earning less than the non-Dalit. Okay, and that is true across all category of worker, whether you look at the casual worker, regular worker, self-employed workers. Okay, and that remain true for the both all India and Bihar. Of course, for Bihar we get a bit high figure, but overall that is the true. Dalit on average earn less than the non-Dalit people. Okay. If you compare the Dalit average earning with the minimum wage, then again we can find that around half of the Dalit workers are not getting even the minimum wage stipulated for the non-skilled worker. And the figure for the high caste Hindu one is the only 38% in case of Bihar. Okay, so again, there are more Dalits who are not getting the minimum wages as compared to the high caste Hindu people. Okay, if you compare the wage earning with the poverty line of income, then again we can find that there are larger proportion of Dalit workers who are not getting even the poverty line of income. Okay, so I can make a three category here: poor, marginal, and vulnerable worker. And so poor worker are basically the one who are not getting a poverty line of income. Marginal one is getting a poverty line of income, but their income is less than the 1.2 times of poverty line of income. And vulnerable worker is the one who are getting a poverty line, but their income is not more than twice of the poverty line of income. So this classification is based on the Kannan papers. And we can see that if you consider both poor, marginal, and vulnerable together, then around half of the Dalit workers are vulnerable to poor, and at all India level. And for Bihar, this figure is very high. For Bihar, it is coming out to 66.68%. That means more than, around 2/3 of the Dalit workers are either poor or marginal poor or vulnerable to poor. Okay, and of course, Bihar average figure is 62.01. Okay, so we can say that more than 50% of Bihar's workers are vulnerable to poverty. But for, as I said, for Dalit, it is very high.
And if you consider their family member also and count the level of poverty, then we can see here around 80% of the list, including their family members, are poor as per the my definitions, which include poor, marginal, and vulnerable poor. Okay, and for Bihar, this figure is 73.9%. Okay, so the conclusion would be here. The first, Dalits are not having income generating assets. Since they are not having an income generating assets, they rely on more on casual workers, and more they're relying on more to work as a worker. Okay, casual worker particularly. They work as a casual worker. They get on average less wage than the other category. Okay, they get less wage. Okay, that affect their spending capacity. Okay, and they spend less on food commodity. Since they spend less on food commodity, okay, they are more prone to the disease. Okay, that affect their health directly. Okay, that affect their productivity. Okay, as in that affect their health. They are, as I said, they are frequent to visit to the doctor for their general health care purposes. Their spending on health expenditure is on average high in proportion to their household budget than the other category. And since their health also affects their productivity, okay, so they get less wages. If you relate this one, the productivity of labor with the wage rate, though that area is again contentious. But since here the people are forced to spend more on the health expenditure, of course they have to compromise with the other expenditure. So let's say that they are compromising with the education expenditure. Okay, and since they are compromising with their expenditure education, they are constant to build their human capability to advance in their living situations. Okay, and that of course coming out with the advancement in the wage work. And because of and this vicious cycle continue, and they remain trapped in the poverty. So that's much. I think I exceed my time. Abhinay? Yeah, thank you. So, Yeah. Well. ये कोई issue नहीं है. Okay. Yeah. Yeah. So, Maybe if you have more conclusions, you can drop it in 1 or 2 lines. So no issue at all. Yeah. Otherwise, fine. The overall. Okay. Maybe yeah, that's perfectly fine. So a wonderful presentation. So basically, Dr. Krishnan very clearly he indicated that even having a high growth rate in Bihar, still the marginalized section, particularly the most marginal section of the society, which has been the Dalit, historically has not get what it was expected to get. And in fact, the gap between Dalit and other communities remained significantly higher. So maybe okay, so maybe we will take questions after that. So let's others also present, and then we'll collect questions. I request all of you to also collect questions for individual presentation, and we'll discuss later. So then I invite Manish for so his presentation. So maybe thank you, sir. Am I audible? Yes. Yeah. Thank you, Abhinay sir, and thank you, Pradeep sir, for giving me this opportunity to share another work of mine to the fellows of Gyanotsava. This work is actually a co-authored work, which I have worked with Dr. Avinash Kumar, who is from Purnia district of Bihar, and he is currently a faculty member in JNU. So this work is already published in EPW in 2020. So this is around the marginalized migrants and Bihar as an area of origin for migrant workers. So as you would remember, March 24th, 2020 at 8 p.m., our Prime Minister declared the national lockdown. And as a result of that, the very next day, we saw a large number of people walking on the road
because there were no available transportation facilities, so they were just walking towards their home estates. And in most of the cases, we noticed that those workers were largely from Bihar. So the plight of these workers became a subject of international attention after a nationwide lockdown on the last week of March 2020. So according to the recent survey conducted, the survey which was conducted during April 2020, in midweek of April 2020, 90% of the migrant workers in various states did not get paid by their employers. And this was published in The Hindu that 96% did not receive ration from government, and 70% of the migrant workers did not get cooked food. Another work which highlighted the plight of migrant workers, they noted that according to World Bank, in just a few days of lockdown, around 60,000 people had moved from urban centers to rural areas. And this was published in Economic Times. Then I was also part of the study group which conducted some surveys based on the news items reported. So we calculated some numbers, and several migrant laborers and their family members, including children, lost their life on their way back, either out of hunger or due to some accidents. So out-migration from Bihar in search of livelihood has been normalized over several decades. So in this presentation, or in this work, what we have tried to locate or find out the trends of migration or the interstate migration is with a special focus on Bihar. And then we are asking some questions. If we are getting some trend, especially from Bihar, then what are the reasons behind such migration? And that is some kind of pushed migration if we are talking in mainstream terms. So those questions we are trying to answer in this paper. And we have noted that the trend, as per economic survey published in 2016-17, related to 16-17, which had reported that there were 60 million, 6 crore interstate migrants in the country. Another pioneer in this area, Professor Ravi Srivastava, he calculated interstate migrant to be around 6.5 crore. So according to census of 2011, approximately 5.5 crore interstate migrants were present in India. And the top 5 states were, which are basically top 5 destinations for migrant workers in India, were Maharashtra, Delhi, Uttar Pradesh, Gujarat, and Haryana. So to be precise, 17% of the total interstate migrants in the country goes to Maharashtra, 12% to Delhi, 7% to Uttar Pradesh, 7% to Gujarat, and 7% to Haryana. And the top origin of the migrant workers are Uttar Pradesh. So basically, migrant workers are from Uttar Pradesh, 23% from Uttar Pradesh, which is bigger in size if you compare that with Bihar. But 14% of the total migrant workers in India are from Bihar. 7% from Rajasthan, 6% from Maharashtra, and 5% from Madhya Pradesh. If you would look at in terms of the migrant population ratio, then again, Bihar is at the top. So Bihar is the basically in terms of the density of migrant workers, in terms of the population, so Bihar is at the top. And top destination of Bihar workers or migrants of Bihar are basically some of the neighboring states such as Jharkhand, West Bengal, Uttar Pradesh, etc. But prominently, Bihar workers are going to Delhi, then Maharashtra, Haryana, Gujarat, Assam, Chhattisgarh, etc. In these areas, they are not only going to work in the construction site or some service sectors. So Avnindra sir was talking about a structural transformation debate. So in the structural transformation debate, if you would look at some of the mainstream literature, they are focusing on agrarian crisis as if agrarian crisis is an opportunity for them.
So basically, the Lewisian model, which is the main text for mainstream economics on the migration and the migration of worker from agriculture to non-agriculture sector, or agriculture dominated state to non-agriculture dominated states. So if you would look at that, you would notice that they are talking about if economy is growing, then with the growth rate, economy's dependence on agriculture would decline. Conversely, they would say that if you are noticing the decline of agriculture, or decline of agriculture dependent population, or decline in income generated from agriculture, then you should actually celebrate this, because that is some kind of indicator for growth of the economy as a whole, because economy is more dependent on manufacturing or services, etc. But should we locate such trend, especially with related to Bihar, that is this trend of out migration or decreasing dependence on agriculture, or moving out of population from agriculture and going and some working in the non-agriculture sector or some other sectors, should we celebrate that? Then there is a one question. You need to also identify workers who are moving out of agriculture in Bihar. Where are they going and working? So workers are going from Bihar and working in Chhattisgarh, for example, Punjab or Haryana, for example, and in Western Uttar Pradesh, that is another example. So in these parts, the seasonal migration reflect that workers are moving out of Bihar and going and working there in agriculture sectors. So it is not some kind of structural transformation where workers are moving outside agriculture and getting some employment opportunities in the non-agriculture sector. So basically, they are moving from agriculture and working in agriculture. So what does it mean? So this is the prominent question that is what we are trying to answer in this paper. The second thing is around so I think we lost. There is power cut, perhaps. Some kind of major power cut. Okay, just. Let him try. Maybe we can wait for. Okay, he is joining, so light cut exactly. So Yes. Yeah, okay. Welcome back. I hope I am back. Yes, you're back. Please go ahead. Go on, and also cause disconnection of Wi-Fi. Anyway, so I was just talking about a trend. If you compare the NSS data on migrant workers from Bihar, that was in 2010, it was 4.7 million. So basically, if you compare this trend with the census, from 38% of the migrant, that increased to 59%. So it indicates that in the next 4 years, while the population of Bihar increased by 38%, migrant population increased by 60%. So the growth rate of migrant workers, or the number of workers who are migrating, is actually 60% in 4 years, and the population growth rate is just 38%. So that gives you some sense of people dependence on migration, and what are the reasons behind their migration, basically. So the Census of India notes regions behind migration,
and the numbers are in front of us. In case of Bihar, those who are moving out of state, 30% of them are actually moving out for the search of work or better employment opportunities. 27% are moving with the households. So combining these two, you have 57%. Rest of the things are for education, for business purposes, for marriage-related migration, etc. So, but prominently, these are basically because of the employment or work opportunities outside the state. So what should be done? That is the question. And the first question is related to agrarian crisis. When I'm saying one of the prominent reasons to explain out migration of the workers from Bihar is actually agrarian crisis. And that is one of the prominent reasons. The migration would, this agrarian crisis does not mean that we just need to, in order to solve the agrarian crisis, we just need to improve productivity or just we need to increase output in agriculture. Any solution for agrarian crisis is actually not a solution if until it solves the livelihood problem. Until unless we incorporate the increment or the deprivation of the livelihood in this discourse, then any agrarian crisis is actually not provided. Any solution for agrarian crisis is not actually a solution. It may give you increased output, it may give you some increased productivity, but it may not transform the livelihood of those who are dependent on agriculture. So that is one thing that we need to understand. As far as government policies are concerned, government has increased expenditure on agriculture. But if you would look at the expenditure part of the government of Bihar, then that is largely in the last 5 years, it is largely on the capital expenditure. So as we know that capital expenditure takes some time to realize its output or to its desired output. Its desired outcome may take some time, but our dependence on revenue expenditure has continuously increased, whereas government has not provided the revenue expenditure to the mark. The second thing is about industry. So it is also true, if you see the situation of last 15 years, then in 2005, the number of factories as per annual survey of industries, 2005 and 6, it was 1,669. It increased to 3,531 in 2016 and 17. So obviously you have increased number of factories in the state in little different sectors. I'm not going in detailed discussion about the sectors, but there is an increase, overall increase of the number of industries. But if you would look at the number of workers increase working in these factories, that is not that impressive. So actually the number of workers per factory has declined over this period. What does it mean? It means that we are setting a factory which is actually not generating proportional employment. So the growth of employment is not proportional with the growth of factories, number of factories in Bihar. So that is one aspect where we can see the clear displacement of the worker because of the even with the expansion of a number of factories. So these are the two prominent things. In order to solve or in order to answer these questions, obviously we have some capacity to solve agrarian crisis. We can focus on some industry which are actually dependent on agriculture, which can incorporate agriculture where people dependent on agriculture can derive their income from industry. And through the agriculture industry relationship, we may see some kind of solution of this crisis. We may actually not want to stop migration as a whole, but even if we are providing some workers to work in some other areas, if they are finding it comfortable, then that should not bring another kind of vulnerable situation for them. We actually need to solve their vulnerability. We need to find solution to eliminate their vulnerability. In order to do that, we may have to focus them in empowering them. Even if they are going out to work somewhere, then they should be empowered. So these are the three key solution possibilities that we have highlighted in this case. One, you need to solve agrarian crisis. There are methods discussed in different other works.
Number two, you have to focus on such industry which can provide employment, and that can be connected with the agriculture in case of Bihar. And number three, even if workers are moving out of the state, they should not be become vulnerable to another kind of exposure. They should actually be empowered through some kind of skilling, some kind of training, etc. And through that empowerment, we can see some kind of transformation in their livelihood. Thank you so much. Thank you, Manish, for wonderful paper. So basically a very important idea that, okay, agrarian crisis, if it is not dealt with properly and from a different perspective, Bihar's migration cannot be stopped. And in fact, Bihar's migration is not at all an indicator of development. It's basically an indicator of distress. And the final point, which is very important, that the growth, which actually I started at the beginning, that growth is totally delinked with, employment generation. So even in the formal sector. So that's very important. In fact, one of the papers earlier I've written about how, major transformation was happening in construction. That was also dependent on contractual nature of employment and all. So whatever transition Bihar actually witnessed in first 10 years was primarily a rise in construction sector, and largely the jobs were in contractual in nature. So no successful transformation of workforce primarily. Okay, thank you. We will get back to you after this. So Santosh, I think, yeah, you start and just stick to 15 minutes, then we'll have more session for discussion. Okay, thank you, Vanindra sir. Last speaker के दो एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है. पहले वाले अगर ज्यादा टाइम ले लिया तो आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है. दूसरा एडवांटेज ये है कि बहुत सारी बातें वो लोग बोल देते हैं तो आप शायद उनके उस पर बैकग्राउंड करके बोल सकते हैं. तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हाँ, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि in terms of time I was very much yes, 15 मिनट में both of you खत्म are करें इस प्रेजेंटेशन. और मैं कोशिश करूंगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों करें, क्योंकि हम बिहार में हैं तो फिर थोड़ा सा. So as I said, like my topic of presentation was agricultural development in Bihar, some structural issues. So as our moderator said, am I audible? Hello? Yes, perfectly. Okay. Bilkul. Okay, as our moderator said that the growth numbers in Bihar in the last 3 decades have been very impressive, as we can see. But Bihar remains one of the backward states of India in almost every economic and human development indicators. In the last year, National Multidimensional Poverty Index was released by the Niti Aayog, where it brings out that the fact that Bihar has the highest percentage of poverty among all Indian states. And it shows that around 52% of the, basically in terms of head count ratio, that 52% of the population is poor in Bihar. So what are the reasons of these backwardness? बहुत सारे लोग बहुत तरह के कारण गिनाते हैं, but what I feel is that unless we see the the last 50, 60, 70 years of how Bihar was growing, so what we find the reasons of backwardness, that is the first one is higher land inequality. Suppose a large population doesn't have land. Our earlier presenter, Dr. Krishna, already mentioned that the landlessness is very high in Bihar. Then after this higher land inequality in Bihar, the second is less. What type of public investment is there in Bihar? Basically, if we see a large number of population is involved in agriculture, so what is the proportion of Bihar's public expenditure which is going into agriculture? Then suppose a large population is involved in agriculture and they are producing some kind of agricultural produce. So whether that is being channelized or the marketing system or marketing institutions, in what way they are performing. So there are few studies which I would like to mention.
a paper written in 2021 by Indao and Misra, they reveal basically that insufficient investment towards basically the manufacturing sector puts a barrier in absorbing the surplus labor from rural areas in Bihar, as the sector itself languish, basically the manufacturing sector. So he basically figure out that in 2006, around 57.5% of the total hired workers were basically going into manufacturing units of Bihar. But in 2016, it has declined to only 46.7%. So in that way, so there is uneven distribution of public investment, which I mentioned as third reason. And henceforth, the development initiative and benefits are also uneven. And thus, it basically widens the socio-economic disparity in Bihar. But another paper by Alakh Narayan Sharma and Jerry Rogers, basically what they say that of late in the last 15 to 20 or 30 years, there had been signs of emergence from economic stagnation in Bihar. And they said that the real wages have risen substantially, agricultural productivity has increased, and remittances from migration have become one of the important contributors in the rural economy. But for this to continue for a larger period, there is a need for agrarian transformation, which Manish was discussing earlier, just before this in his presentation, basically. So what I'm going to discuss here, basically the three things. First is that the long drawn structural imbalance in Bihar, that is in terms of what is the status of land distribution in Bihar. Second is, which is already basically done by Krishna. Then what is the regional bias basically in terms of in terms of structural imbalance of Bihar, and then what kind of basically the government spending is there in agriculture and rural sector of Bihar. Now coming to basically what I said earlier, that to understand the structural issue, we have to understand what basically happened in the structure of agriculture or the structure of land distribution. As we know that Bihar was the first state to enact land reform, basically in 1950. And it's basically we all know what were the objectives of the land reform. That was to transform the semi-feudal agrarian relations through imposition of ceiling, then consolidation of surplus land above the ceiling, and third was to distribute the land among the real tillers of the land. So basically what happened, to fix a ceiling, there should have been a land record, but that was missing in Bihar. So in 1950, the task force was constituted by the Bihar government to find out, to basically make a land record. It took around 12 years to pass the, because it took time to record for land recording. So the Ceiling Act was passed in 1962 in Bihar. So till 1990, what happened basically, 3.85 lakh hectares of land was 3.85 lakh hectares of land was basically identified as ceiling surplus. Of that 3.85 lakh hectares, around 2.62 lakh hectares of land were basically distributed, and rest of the land, basically around 1.25 hectares, 1.25 lakh hectares of land were basically not distributed in because they went into court appellates or they were not good for distribution. So basically this was the condition till 1990. So in terms of only 2.75% of the total agrarian land of Bihar was distributed among the tillers of Bihar. Then because there was, due to political pressure or something, in 2006, the then Nitish Kumar government constituted the D. Bandyopadhyay committee. That was Bihar Land Reform Commission.
to identify land and to identify rules to redistribute land in Bihar. And they basically gave a report in 2008. But in 2009, the Nitish Kumar government, due to pressure from large landholders or whatever, or some political compulsions, Nitish Kumar said that, okay, we are not going to implement this report. And the report, basically, I would like to mention just one recommendation of the report, that the Bandyopadhyay Commission said that 10 decimals of land should be provided to 5.84 lakh non-farm rural workers. But some or other way, Nitish Kumar did not implement the report. Now, because land reform failed in Bihar miserably, so what was the solution? How then in what way the state should develop? So not just Bihar, but the bureaucracy of India, basically agricultural development bureaucracy, who were responsible for agricultural development, they thought that, okay, if we are not able to reform the land or redistribute the land, let's do something else. So what they did, they brought in Green Revolution. Basically, the large scale application of modern science and technology to agriculture. Basically, that was the reason, because they were not able to redistribute land, and because they could not redistribute the land, so the poverty alleviation or other objectives were failed. So they brought in Green Revolution. Okay, if that if something is not working, let's do something else. But what happened, we know, I'm not going into the what happened in Green Revolution, but but I would like to mention just one thing, that Green Revolution favored large and medium landowners, and it mostly went into only irrigated areas. And then what happened, inter-regional disparity or inter-regional inequality went up. It happened in Bihar also, it happened in other states as well. So, and one more thing happened, that Green Revolution strategy made the conditions of tenant farmers sharecroppers worse off, because the costs went up due to Green Revolution technology. Now, I will share screen for okay, sorry. Please share screen. Yes, I'm sharing. Is it visible? Yeah, it started. Okay. So I would because हम लोग जब तक थोड़ा डेटा ना दिखा लें, समझ में नहीं आता कि हम लोग थोड़ा सा अर्थशास्त्र वाला काम कर रहे हैं. तो ये स्लाइड ऑलरेडी बेसिकली मैंने जो कहा है अभी वो मैं डेटा में दिखा रहा हूं कि दरअसल क्या हुआ है. तो ये ऑलरेडी कृष्णा ने दिखाया है कि जो लैंडलेसनेस है बिहार में वो कितना ज्यादा हाई है. अराउंड 50%, हाफ ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स आर लैंडलेस. अगर आप एनएसएस की रिपोर्ट देखेंगे तो बिहार में ये लैंडलेसनेस 17-18% ही दिखेगी. लेकिन चूंकि कृष्णा ने कहा कि ड्यू टू मेथोडोलॉजिकल सम एरर, क्या करते हैं एनएसएस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जिनके पास होम स्टेड लैंड है, मतलब घर से लगी हुई जमीन है थोड़ी सी, उसको वो लैंडलेसनेस नहीं मानते हैं. तो हम ये कह रहे हैं कि अगर घर से मान लीजिए थोड़ा 1 बिस्सा 2 बिस्सा 1 कट्ठा 2 कट्ठा किसी की जमीन है, तो वो कुछ इकोनॉमिक अर्निंग तो उससे नहीं कर पाएगा. चाहे जो वो ठीक है सब्जियां उगा लेगा या कुछ कर लेगा, लेकिन और कुछ नहीं कर पाएगा. तो इस संदर्भ में अगर हम मेथोडोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस करें तो लैंडलेसनेस बिहार में ये दिखाता है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स आर लैंडलेस. और बाकी जो है, और अगर हम लैंडलेस और सेमी मार्जिनल और मार्जिनल हाउस होल्ड्स को जोड़ दें तो वो अराउंड होता है 94%. तो 94% रूरल हाउस होल्ड्स बहुत कम जमीन पर खेती कर रहे हैं.
या आधे के पास तो जमीन नहीं है, बाकी जो 44-45% है उनके पास बहुत कम जमीन है। इसके बाद ये भी डॉक्टर कृष्णा ने दिखाया है कि अगर हम सोशल कैटेगरी वाइज इस डेटा को दिखाएं तो किस तरह से लैंडलेसनेस बिहार में है। एसटीज में 70%, एससीज में 69% और ओबीसीज में 46%। तो हम किसी भी ट्रेन में बैठ जाएं और खाली एक कॉपी और कलम लेके ये सर्वे करें कि कौन माइग्रेट कर रहा है बिहार से, कि 2/3 of the households belonging to SCs, STs and OBCs, they don't have any land basically where they can do some economic earning. So what they will do, they will necessarily migrate if there is no other manufacturing unit in Bihar, if they are not getting absorbed in Bihar, so they will migrate. Now एक और impact है इस landlessness का, वो है persistence of tenancy in Bihar. So if we can see the from 91, 92 to 2018-19, the proportion of tenancy, basically incidence of tenancy, has widely increased from 9.4% to 37.2%. Households are basically tenant farmers, and that in India is something around 18% only. And the kind of land, it was 5.5% of the total agricultural land was there in tenancy in 1991-92. Now it is around 32.1%. So almost 1/3 of the total cropped area is in basically in tenancy in Bihar. Now coming to one more important figure, why there is agrarian crisis. एक तो जमीनें नहीं हैं, दूसरा ये कि ये जो मैं बता रहा हूं कि जैसे कि एवरेज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बिहार में क्या है। दो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, पैडी और व्हीट। ये डेटा मैंने लिया है, कैलकुलेट किया है खुद से कॉस्ट CACP के डेटा से, जिसमें पर हेक्टेयर कॉस्ट एवरेज कॉस्ट क्या है टोटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ, it includes both fixed and variable cost, कि पैडी का जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 2005-06 में पर हेक्टेयर 15,181 रुपए था, वो बढ़ के 47,707 रुपए हो। इसी तरह व्हीट का जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पर हेक्टेयर था वो 15,010 रुपए से बढ़ के 49,656 रुपए हो गए। ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली अगर हम पिछले 20 साल में देखें कि सीड एक्ट में क्या हुआ, फर्टिलाइजर्स के लिए क्या हुआ, जो फ्यूल जो एग्रीकल्चर में लगता है उसका क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का क्या हुआ, जो दूसरे अदर वेरिएबल कॉस्ट हैं या फिक्स्ड कॉस्ट हैं उनका क्या हुआ, वो क्योंकि हर चीज प्राइवेटाइज हो गई। सीड्स पहले सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दे देता था, अब वो सब प्राइवेट में चला गया। 2002 में सीड एक्ट आने के बाद जब सारा कॉर्पोरेशन या कोई भी प्राइवेट कंपनी अब सीड प्रोड्यूस कर सकती है, सीड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। वही हाल हुआ फर्टिलाइजर सब्सिडी के घटने से, कॉस्ट इंक्रीज हुई फ्यूल सब्सिडी के खत्म हो जाने से और फर्टिलाइजर सब्सिडी के खत्म हो जाने से। तो बेसिकली 2-3 थिंग्स व्हिच हैव पुश्ड कॉस्ट अप फॉर बोथ पैडी एंड व्हीट, that is due to the privatization of everything what in the neoliberal era. Now अगर हम इनकम अब देखें, पर हेक्टेयर इनकम किसानों की कितनी हो रही है बिहार में, तो पैडी और व्हीट पर हेक्टेयर इनकम फ्रॉम मेन प्लस बाई प्रोडक्ट, तो बिहार के किसान 2017-18 में उनको 31 रुपए का मुनाफा हो रहा था। बाकी वो हमेशा वो ऑलमोस्ट they were having negative earning for paddy. बट अगर हम सिर्फ मेन प्रोड्यूस जैसे गेहूं बेच रहे हैं या चावल बेच रहे हैं, गेहूं या चावल से जो उनकी इनकम है वो that is always basically negative, whether it is basically if we can see this one, this row, so they are getting negative income per hectare in Bihar.
उनको फायदा तब हो रहा है जैसे वो मेन प्रोड्यूस के साथ बाई प्रोडक्ट जैसे भूसा है, जैसे और कुछ है, उसको बेचते हैं तो थोड़ा सा उनको मुनाफा हो रहा है पर हेक्टेयर बिहार में। तो देयर इज मैसिव एग्रेरियन क्राइसिस। सपोज कि हम सिर्फ खेती पर निर्भर हो जाएं, तो इवन इफ दे आर लाइक लार्ज फार्मर और स्मॉल और मीडियम व्हाट एवर दे आर हैविंग नेगेटिव अर्निंग। बट एक चीज और है, ये 2018-19 के एनएसएस सर्वे से दिखा कि एवरेज मंथली रियल वेजेस क्या है बिहार में, एंड दैट इंक्लूड्स वेजेस, that includes earning from cultivation, that includes earning from farming of animals, that include non-farm business in rural area. So we can say that if we compare India and Bihar, so अगर all sizes का देख लें लास्ट रो, तो जो ऑल इंडिया का जो एवरेज मंथली रियल वेज है वो है 5,925 रुपए, और वो बिहार में है 4,404 रुपए। मतलब लगभग 20% कम है रियल वेजेस अगर हम पूरे भारत से तुलना करें और बिहार से तुलना करें। नाउ एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा, इसके बाद स्टॉप करूंगा, थोड़ा सा 2 मिनट मुझे और टाइम दे दीजिए। कि हम ये कहते हैं कि जो किसान आंदोलन हुआ वो हरियाणा में क्यों हुआ, पंजाब में क्यों हुआ, बिहार में क्यों नहीं हुआ, या यूपी के एक बड़े हिस्से पूर्वी उत्तर प्रदेश या किसी और स्टेट में क्यों नहीं हुआ। तो जो हम ये डिमांड कर रहे हैं पंजाब के किसान या हरियाणा के किसान की हमको एमएसपी की गारंटी दी जाए, और वहां पे अ लार्ज सेक्शन ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स दे आर एबल टू सेल इन देयर मंडीज टू एफसीआई और टू स्टेट एजेंसीज। बट वो बिहार में क्या हो रहा है कि एक तो बहुत कम लोग अवेयर हैं कि देयर इज एमएसपी, just 28% or 25% farmers are knowing about MSP, and rest they say that they don't know about the MSP. Then if they are selling in any surplus produce, so agency to which they are selling in Bihar is FCI को 2018-19 में सिर्फ 2.5% लोग बेच रहे हैं। Only 2.5% rural households are selling their produce to FCI. Then likewise, look, state food corporation or state civil supplies, and did not sell. Around 93% of the farmers do not sell any produce to anyone. So जब जमीनें नहीं है, जब खेती वो नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, तो वो कहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेचेंगे। और तो इस तरह की, तो वो एग्रेरियन क्राइसिस में अपने आप खुद पहुंचेंगे, क्योंकि कोई गवर्नमेंट सपोर्ट अगर नहीं होगा तो ऑफ कोर्स वी आर लाइक फार्मर्स आर फोर्स्ड टू गो इनटू एग्रेरियन क्राइसिस। देन की रीजंस फॉर नॉट सेलिंग द टू एनी एजेंसी, दैट इज लाइक प्रोक्योरमेंट एजेंसी नॉट अवेलेबल, नो लोकल परचेजर, पुअर क्वालिटी ऑफ क्रॉप, कुछ लोगों ने प्री प्लेस्ड किया होता है, और बहुत सारे लोगों ने अदर्स का रीजन दिया कि वो नहीं बेचते हैं, जिसमें ये होता है कि उनके पास कोई सरप्लस प्रोड्यूस नहीं है इसलिए वो नहीं बेच पाते हैं, या मार्केट से जो मंडियां हैं वो बहुत दूर है इसलिए नहीं बेच पाते हैं। सो नाउ द लास्ट थिंग, कि ये दिखाते हुए कि जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो एग्रीकल्चर में है वो किस दशा में है बिहार में। अगर हम देखें 2005 से ये बेसिकली ट्राई ईयर एवरेज है, वो 2019-20 तक कि जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में जो basically combined revenue and capital expenditure of the GSDP on in Bihar, कि सरकार कितना खर्च कर रही है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज पर, मात्र 1.3% GSDP का। So a large population is involved in agriculture, but just 1.3% of the total GSDP जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है उसका खर्चा एग्रीकल्चर पर होता है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जिसमें एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज सब आता है। और दूसरा, इसी तरह बिहार में जो फ्लड्स आती हैं उस पे अगर हम देखें तो वही, क्योंकि फ्लड्स
के कारण एक बहुत बड़ा खेती का जो हिस्सा है वो डूब जाता है, उस पर भी बहुत कम सरकार खर्च करती है। इसके अलावा विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो कि सबसे ज्यादा रोजगार दे सकता है बिहार में, जो माइग्रेशन को रोक सकता है, उस पर GSDP का मात्र अराउंड 0.03% वो खर्च करते हैं। तो कैसे, मतलब इन व्हाट वे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल सेक्टर और रूरल सेक्टर विल इम्प्रूव। थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है रूरल डेवलपमेंट में, वो भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से आ रही हैं, जिसमें ढेर सारा कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसके कारण थोड़ा हिस्सा थोड़ा हम देखेंगे कि रूरल डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर बढ़ा है बिहार सरकार। और टोटल एग्रीकल्चरल GDP का मात्र 12% बिहार में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर पर खर्च होता है। तो ये एक ओवरव्यू है कि बिहार में जो स्ट्रक्चरल वो है मतलब रूरल सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर है, उसका क्या कंडीशन है। सो इन कंक्लूडिंग रिमार्क आई वुड से दैट द नॉट सो सक्सेसफुल और failed land reform in Bihar has resulted into a historically inequitous distribution of land in Bihar. So there is increase in agricultural inequality, and then high incidence of tenancy in Bihar is there, as I show like earlier I presented. Then the landlessness among the STs and SCs have been extremely high in Bihar. And an analysis of cost data shows that basically the cost of cultivation data shows that the net income from two major crops, paddy and wheat in Bihar, had been negative in most of the time periods taken for the study. Then cultivator households had been bearing larger costs of cultivation than what they are receiving from the in form of income. Then the last point is the public investment, that is combined revenue and capital expenditure in different heads of agricultural and allied activities as a percentage of GSDP had been less than 1.5% over the period. So this is my submission for the presentation, and then thank you. Thank you. So thank you संतोष। पहले तो मैं तीनों को ये धन्यवाद करूंगा कि बहुत टाइमली, बहुत प्रिसाइज मैनर में अपनी बातों को रखा, और बहुत कम होता है इस तरह का, जैसे मॉडरेटर का काम ही कम कर दिया आप लोगों ने। सो इनफैक्ट मैं ये सजेस्ट करता हूँ, चूंकि हमारे पास टाइम बहुत नहीं है, तो हम लोग कलेक्ट कर लेंगे सारे क्वेश्चंस जिनसे पूछने हैं। तो आप लोग सभी लोग अपने क्वेश्चंस रख लीजिए और सारे लोग बता दीजिए किन से क्वेश्चंस है। एंड आई रिक्वेस्ट पैनलिस्ट कि आप कलेक्ट कर लें क्वेश्चन सारा, और एक साथ फिर उसको जवाब दे तो बेहतर होगा, बेहतर तरीके। कई क्वेश्चंस रिपीटेशंस भी होती है, बट डेफिनेटली एज अ मॉडरेटर I will take privilege of asking first question. So मैं चूंकि संतोष का भी हुआ है, तो मैं संतोष से पूछना चाहता हूँ दो तीन चीजें बहुत ब्रीफली। सो पहली बात यह है कि जब कॉस्ट और बेनिफिट की बात हो रही थी, तो ओके, ओवरऑल इंडिया के कंपैरिजन में बिहार के जो फार्मर्स हैं वो उनकी टोटल इनकम कम है, बट ये डिफरेंट है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फार्मर के लिए। सो सेमी मार्जिनल, लार्जर, सम मैंने देखा कुछ कैटेगरीज में फार्मर्स इन बिहार आर हैविंग मोर इनकम एज कंपेयर टू एवरेज इनकम कंपेयर टू नेशनल एवरेज। सो दैट्स वेरी स्ट्राइकिंग पॉइंट कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिहार के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कम होते हैं, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ओके, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स दैट्स अंडरस्टूड, बट टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक दैट स्टिल वी हैव land reforms as a means to achieve social justice in Bihar? To what extent the land has already been distributed among family members and all? So is there any, still the land record in Bihar is not properly maintained. So in order to find out surplus land, it's really difficult to find out surplus land in Bihar, even in this point of time. So how do you think that it is relevant today, and it should be made relevant today, in fact? ठीक है। So और भी क्वेश्चंस है, बट मे बी मैं ऑडियंस से क्वेश्चंस आएगा। सो मनीष से मेरा क्वेश्चन है कि इवन इफ वी मूव फ्रॉम एग्रीकल्चर, सो वी प्रमोट अदर इंडस्ट्रीज आल्सो, बट द एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, जो एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी है
अदर इंडस्ट्रीज की, वो भी कम है। क्योंकि अगर हम लोग मूव करें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की तरफ, ऑफ कोर्स वन ऑफ द सजेशंस फ्रॉम योर साइड, still it's coming from the large sector. So if you open that sector, it's coming from, Adani Williver, or many big industries are basically willing to invest in food processing units in Bihar. So again, the employment elasticity, जो employment generation है, उसकी capacity बहुत कम होगी. तो सिंपली ये कह देना कि दूसरे सेक्टर्स को या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है बिहार में, या कुछ और उसके ऊपर स्ट्रक्चर्स को इंपोज करने की जरूरत है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। और कृष्णा, मुझे लगता है कि एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसमें, कि जब बिहार में हम बात कर रहे हैं दलित और नॉन दलित के बीच में डिफरेंस में, तो मुझे लग रहा है कि ऑल इंडिया में जो डिफरेंस है और बिहार में जो डिफरेंस है, उसको भी बहुत माइन्यूटली देखने की जरूरत है। वो जो गैप है, वो गैप रिलेटिवली ऑल इंडिया से बेहतर है या वर्स है। और अगर बेहतर है कुछ सेंस में, क्योंकि मैं जब डेटा देख रहा था, मुझे लग रहा था कि कुछ सेंस में बिहार के जो गैप है बिटवीन दलित एंड नॉन दलित और सम अदर कैटेगरीज, ये शायद नेशनल गैप से कम है या रिलेटिवली सिमिलर है। सो हाउ डू यू पुट बिहार्स डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन इन ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव? एक तो क्लियर है कि ऑब्वियसली बिहार के ग्रोथ में डेफिनेटली एक्सक्लूजनरी है सेंस में, अभी तक वो नहीं हो पाया है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं ऑफ कोर्स प्रदीप जी एंड अवधेश जी, अवधेश जी कुछ अवधेश जी। जी सर, आप तीनों पैनल ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया, और हमें जो लगा कि पूरा डिस्कशन, वीडियो ऑन कर लीजिए, आवाज आ रही, वीडियो ऑन कर लीजिए। जी सर, तीनों पैनल ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया, और हमें लगा कि पूरा डिस्कशन एग्रीकल्चर बेस्ड डिस्कशन हुआ है। ठीक है, बिहार एग्रीकल्चर डोमिनेटेड स्टेट है, तो अच्छी बात है। पर मेरा सर उसमें कुछ बात बोलनी है जो ग्राउंड लेवल पर अभी जो दिखाई दे रहा है, कि एक छोटा सा सर, अगर एक दो मिनट का समय दें तो हम कुछ उसमें ऐड करना चाहें, जोड़ना चाहेंगे अगर सर। बिल्कुल ब्रीफली, बिल्कुल अवधेश जी। हाँ, ब्रीफली सर, हम जो कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज और शिफ्टिंग का कहते हैं, एग्रीकल्चर में जो शिफ्टिंग हुआ है, खासकर पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम देखते हैं कि पहले लोग जमींदार थे। तो जमींदार थे तो पूरा खेत गांव के रूरल एरियाज के पूरा खेत जमींदारों के हाथ में होता था, और वो सारा खेत, वो मोस्टली गांव में 2-4 जमींदार होते थे, उसका ही सारा खेत होता था, और उनका कल्टीवेशन जमींदार अपने तरीके से करते थे। धीरे धीरे ये शिफ्ट हुआ, कुछ जमींदार जो लोग थे उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन उनके शिफ्ट किए कुछ शेयर क्रॉपिंग यानी बटेदारी सिस्टम में, और उसके बाद कुछ हिस्सा जमीन का उसमें यूज किया गया, और हर जमींदार का वो बटेदार होते थे, और उनका कंसेप्ट था कि पहले जमींदार के खेत को जोतेंगे, देन उसके बाद हम अपना खेत को करेंगे। फिर अभी जो कुछ दिन पहले की कंसेप्ट है, कुछ समय पहले की, उसमें ये था, खासकर नॉर्थ बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, साउथ बिहार नहीं, नॉर्थ बिहार, तो उसमें मैंने देख रहा हूँ कि उसमें जो जमींदारी सिस्टम चल रहा था या जो कुछ भी था, जमीन तो जमीन वाले के पास है, लेकिन मोस्टली लैंड वो अब सीधे बटेदार के हाथ में, जनरली वो SC ST ग्रुप्स और OBC ग्रुप्स से रिलेटेड लोग होते थे, बटेदार लोग, और उनके हाथ में चला गया। और जब उनके हाथ में जा रहा है तो सारा खेती आज के डेट में अब वो केवल बटेदार ही कर रहे हैं, ना कि लैंड ओनर्स कर रहे हैं, मोस्टली। तो सर, जहां मार्जिनल और लैंडलेस, ये हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी डाटा शो कर ही रही है कि बहुत ज्यादा मार्जिनल और लैंडलेस मिलकर लगभग 90% लोग हैं जो जिनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में लगभग गांव के खेत बटेदारों के हाथ में आ गया है, और सारी खेती उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, न कि लैंड ओनर के पास जा रहा है। इस पर एक पेपर मैंने पीछे भी एक बार डिस्कस किया था, कि वो 2011 में एक R विजय ने लिखा था EPW में ही, और वो नॉन कल्टिवेटिंग पीजेंट हाउस होल्ड की बात, मैं तीनों लोगों की बात कर रहा हूँ, तीनों लोगों से। तो उसमें ये था कि आज के डेट में नॉर्थ बिहार में लगभग लोग नॉन कल्टिवेटिंग पीजेंट हाउस होल्ड हो चुके हैं, लैंड ओनर्स बेसिकली, और जो खेती कर रहे हैं वो अभी भी वो SC ST और OBC ग्रुप के लोग, मोस्टली उसी ग्रुप के लोग काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो बटेदार है।
तो सर यहाँ पर जो सिस्टम जो शिफ्ट किया है वो अब खेती ऑलमोस्ट उन्हीं के हाथ में आने से मे बी जो आपका नेचर है, जो प्रोडक्टिविटी जो अभी संतोष जी भी बोले कि बहुत कम है और उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने का रीजन भी यही है कि अब जो खेत हैं वो लैंड बटेदार के हाथ, शेयर क्रॉपर्स के हाथ में चला गया और वो अपनी तरह से खेती कर रहे हैं और वो सर्वाइवल के लिए। और अब उसमें भी माइग्रेशन की बात होती है, मोस्टली वही लोग, अभी सारे लोग बोले हैं कि माइग्रेट वही लोग जनरली हुए हैं। तो मेरा उसमें एक और चीज था कि आज के समय में बैक क्या हुआ है कि मोस्टली जो बटेदार हैं वो अब 4-5 फैमिली ही गांव में रह गए हैं जो बटेदारी करते हैं, ऑलमोस्ट पूरे खेत की खेती करते हैं बटे थ्रू बटेदारी सिस्टम, ऑलमोस्ट पूरे गांव के खेत को खेती करते हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में हुआ वो डिक्रीज करेगा ही, ऑब्वियसली उनका लेवल ऑफ एजुकेशन एग्रीकल्चर, जो अभी सर संतोष जी बोले भी एमएसपी की नॉलेज उनके पास बहुत कम रही है और भी कल्टीवेशन प्रोसेस भी है वो ट्रेडिशनल वे में ही करते, पर मैकेनाइजेशन होने से उनका काम हो रहा है। तो मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन जा रहा। दूसरा कृष्णा सर से है कि जो SC/ST के लोग हैं वो कहते हैं कि जो पॉवर्टी को इंडिकेट करता है और वो इलनेस की ओर बात करते हैं, उनकी कंजम्पशन लेवल भी लो हुई है, बहुत लो है, जिसके कारण वो इल होते हैं। लेकिन उसमें एक रीजन और भी है कि उनका जो एक्सपेंडिचर साइड है वो कंस्पिशियस लाइक टोबैको कंजम्पशन और अदर कंजम्पशन पर ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट लेना पड़ता होगा। ये कृष्णा सर से ये क्वेश्चन है कि सर हो सकता है कि इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो ज्यादा और बेहतर हेल्थ स्टेटस को देखकर हम पॉवर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। और बस यही एक दो क्वेश्चन हैं जिस पर हम कर सकते हैं। थैंक यू अवधेश जी। सो पैनलिस्ट से और भी रिक्वेस्ट है कि कई सारे मैसेज में आए हुए हैं क्वेश्चंस, तो जिनके अंदर में है प्लीज आप लोग नोट कर लें। और इज देयर एनी मोर क्वेश्चंस? अगर नहीं तो फिर हम लोग शुरू करेंगे, टाइम भी हो रहा है। सो ठीक है, तो मुझे लगता है कि फिर भी अगर कुछ आएगा, कुछ समय बचेगा तो किसी ने हाथ ऊपर किया है। मैं अब अच्छा हाँ नहीं सर, सॉरी प्रदीप जी। अच्छा, मैं एक टिप्पणी चाहता था कि ये चनपटिया मॉडल की बात चल रही है इन दिनों, इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक मॉडल के रूप में उसको देखा गया कि सरकारी एफर्ट से एक क्लस्टर डेवलप किया, उसके बारे में यदि कोई टिप्पणी करे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में करेंगे। ठीक है, बस एक मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है अवधेश जी के क्वेश्चन पे मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोडक्टिविटी का रिलेशनशिप है टेनेंसी और ओनरशिप के साथ, ये इतना क्लियर नहीं है कि टेनेंट होंगे तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। इनफैक्ट कई पेपर्स ये कहते हैं कि टेनेंट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि उनको रेंट देना होता है, तो वर्क हार्ड। तो ये जो है इनफैक्ट स्टैटिस्टिकली अगर देखेंगे तो स्लाइटली लेकिन सर उसके रीजन भी है कि वो कम एजुकेटेड हैं और काम कम। नहीं, मैं पैनलिस्ट में मैं सिर्फ अपना एक, चूंकि मैं काम कर रहा था मैंने बोल दिया, बाकी पैनलिस्ट ही करेंगे, वो लोग ज्यादा जान रहे हैं। जी सर बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। सो उसी सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कृष्णा फर्स्ट, मनीष एंड देन संतोष। Okay, first of all, thank you for all these questions that come to me. So Samrinder, I'm starting with your question. Okay, so you talked about the gap between SC/ST in Bihar, the gap between SC/ST in the other states. Okay, so here I would like to say that कि overall अगर हम situation देखें दलित की तो वो worse as compared to the non-Dalits, okay, excluding ST, okay, और ये ऑलमोस्ट सारे राज्यों के लिए ये सही है। okay. जब हम गैप की बात करते हैं कि किस स्टेट में ज़्यादा है, किस स्टेट में कम है, और उसकी तुलना जब हम बिहार से करते हैं कि बिहार में कितना है, तो यू आर राइट कि कुछ इंडिकेटर्स के केस में जो गैप है बिटवीन SC एंड अदर कैटेगरी वो कम है। कम इसलिए है कि उन इंडिकेटर्स में अदर कैटेगरी का भी सिचुएशन खराब है और SC/ST का भी खराब है। लेट्स टेक द हेल्थ इंडिकेटर।
पर्टिकुलरली जब हम चाइल्ड मोर्टेलिटी, नियोनेटल मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन की बात किए थे, तो अगर हम इन हेल्थ इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल गैप बिहार के केस में SC एंड अदर कैटेगरी में कम मिलेगा। बट दूसरी स्टेट्स में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा गैप हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम नॉन हेल्थ इंडिकेटर्स की बात करें, जिसमें हम इनकम की बात करें, कंजम्पशंस की बात करें, एजुकेशंस की बात करें, ठीक है ना, या लैंड ओनरशिप की बात करें, कोई भी इकोनॉमिक स्पेयर्स की इंडिकेटर्स की बात करें, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स बिहार के अंदर जो गैप है वो मेरे ऑब्जर्वेशन में थोड़ा ज़्यादा है। क्वांटिटेटिवली मुझे आपके क्वेश्चन को ध्यान में रखकर इसको थोड़ा और स्टडी करना होगा कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। सेकेंड एक क्वेश्चन शायद अवधेश ने बटेदारों के बारे में बोला कि अब ज़्यादातर बटेदार हैं जो मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं गाँव में। तो मेरा यहाँ ऑब्जर्वेशन है कि क्योंकि वो बटेदार हैं तो उनको 1/3 आधा शेयर बिहार में आधा आधा चलता है, एटलीस्ट नॉर्थ बिहार में, जहाँ से गोपालगंज से मैं बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ आधा आधा चलता है। तो संतोष ने एग्रीकल्चर इनकम का एक फिगर प्रेजेंट किया था, ठीक है ना, तो और उसमें ये भी कहा कि ओवरऑल जो खेती है वो नुकसान में है, और ये सभी जानते हैं, गांव में ये ट्रू है कि अब खेती फायदेमंद नहीं रहा है। ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, किसी से भी पूछा जाए तो बोले कि नहीं भाई खेती अब फायदेमंद नहीं है। कर रहे हैं खेती कुछ लोग, उसके सोशल रीजन है कि वो नहीं छोड़ना चाहते हैं खेती, फैमिली माइग्रेट हो गई है, कुछ बूढ़े बच गए हैं, औरतें बच गई हैं, तो क्या करेंगे, ठीक है ना, तो भी खेती की कर रहे हैं। और वो मेरे समझ में एक काइंड ऑफ सब्सिस्टेंस खेती है कि चलो हमारे पास खेत नहीं है, किसी को और पे कर लेते हैं, कम से कम खाने पीने का तो निकल जाएगा, उस टाइप का। तो ये कहना कि उसको डेवलपमेंट से लिंक करना और ये लैंड ओनरशिप से लिंक करना, मुझे लगता है कि यहाँ हमें थोड़ा सा संभल कर चलना होगा जब हम लिंक कर रहे हैं इस चीज़ों को। तो दूसरी चीज मैं फिर पॉवर्टी को ही लेकर कहूँगा कि एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि बिहार में पॉवर्टी, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में पॉवर्टी की बात करें तो डिक्लाइन हुआ है। तो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड जो है एब्सोल्यूट टर्म में अगर नाम आएगा, अगर हम आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले से कंपेयर करें तो उससे बिहार में लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल सोशल कैटेगरी ओके बेटर हुआ है। हाँ, अब हम लेकिन जब हम रिलेटिव टर्म्स की में उसके बात करते हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे हमें थोड़े से यानी अप्स एंड डाउन फिगर मिलेंगे। कुछ कैटेगरी के लिए रिलेटिवली बेटर हुआ है, कुछ कैटेगरी के लिए रिलेटिवली थोड़ा सा वर्स हुआ है। एक और टोबैको कंजम्पशंस को लेकर अवधेश का ही क्वेश्चन था कि अगर चूंकि दलित और आदिवासी टोबैको कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा व्यवहार करेंगे, लेकिन टोबैको कंजम्पशन एक बाई प्रोडक्ट है गरीबी का। क्योंकि हम इतने गरीब हैं, इतने अशिक्षित हैं कि हम we somehow we forced to consume, okay, directly or indirectly, okay. आप take an example of Delhi, okay, or any developed states, okay, where these our migrant people are going. तो उसमें अगर हम जो रिक्शा चालक हैं, जो लेबर का काम करते हैं, ठीक है ना, तो देखेंगे कि उनका जो इंटॉक्सिकेंट कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्लूडिंग टोबैको हुआ, शराब हुआ, उनका कंजम्पशन ज्यादा है। तो ज्यादा है ऑफकोर्स उसके कारण ज्यादा बीमार पड़ेंगे, लेकिन उसका ज्यादा है उसके एक कारण गरीबी भी है। कोई इतने गरीब हैं ओके कि हर दिन वो हेल्दी फूड नहीं खा सकते, ठीक है ना, तो क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और सब ऑफकोर्स और भी दूसरे रीजन हैं इसके। तो इसको डायरेक्टली लिंक हेल्थ से और देन उसका इम्पैक्ट पॉवर्टी पे देखना, फिर मैं यहाँ कहूँगा कि यहाँ भी थोड़ा हमें संभल कर चलने की जरूरत है। एक क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बॉक्स में आया है, तो चैट बॉक्स में, तो यहाँ का ना पहला है कि इज इट पॉसिबल टू अचीव इंक्लूसिवनेस विदाउट अचीविंग सोशल इंक्लूजन। देखिए ये कहना
मुश्किल है। अगर हम अपना एक्सपीरियंस देखें और एक जनरल ट्रेंड देखें तो इन यानी सोशल इकोनॉमिक एडवांसमेंट कहीं कहीं सोशल एक्सप्लेनेशंस को लीड करती है, ठीक है, लेकिन वो भी उसकी भी एक लिमिट है, अप टू सर्टेन एक्सटेंट है। ठीक है, आप इकोनॉमिक एडवांसमेंट में आपकी चूंकि लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गया, आप अच्छे खाने में लगे, अच्छे पढ़ने लगे, अच्छी आपकी एजुकेशन हो गई, आप एक अपर कास्ट पीपल से मिंगल अप हो सकते हैं। लेकिन अगर एक स्टेट के बाद जाएंगे, सोचेंगे कि आप उनके घर में अपनी शादी कर लें या अपनी बेटी या उनसे के बेटी से शादी कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। ये बिहार के लिए भी ट्रू है और ये ऑल इंडिया के लिए भी ट्रू है। वहाँ फिर वो आपकी कास्ट ही आ जाएगी, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ रिच यू आर। आप अगर कहेंगे कि मेरी जाति चेंज कर दो तो वो पॉसिबल नहीं है। Though in the Veda it is, even I heard, I didn't read Veda कि कर्म से किसी की जाति डिफाइन होती है, लेकिन कर्म से आप जाति अपनी डिफाइन करने को बोलिए समाज को, समाज इनकार कर देगा। तो होने की इसकी एक लिमिट है। इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस लीड टू सोशल इंक्लूसिवनेस अप टू लिमिटेड एक्सटेंट। ओके, अगर हम वाइस वर्सा अगर हम सोचें कि सोशल इंक्लूजन इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस को लीड करती है कि नहीं, तो ऑफ कोर्स करेगी। सोशल इंक्लूजन होगा तो एडवांसमेंट होगा। सोशल इंक्लूजन इन द सेंस कि अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा तो आपकी एबिलिटी को देखकर आपको काम दिया जाएगा, उसकी प्रॉपर वेजेस दी जाएगी आपको, ठीक है ना, आपके साथ रिस्पेक्ट किया जाएगा, आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन में मौका दिया जाएगा, तो आप उससे ऑफकोर्स आपकी ह्यूमन एडवांसमेंट जिसको हम कहते हैं, आपकी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ेगी इन ऑल टर्म्स, और कैपेबिलिटी बढ़ने से ऑफकोर्स उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक अगर मेरे लिए है तो आई ट्राई टू गिव एन आंसर, अदरवाइज प्रोबब्ली मनीष is the right person who can give an answer. Second question, in terms of migration from Bihar, how do the Dalit compare with the other caste? I think अब देखिए, क्योंकि दलित ज्यादा वनरेबल है एवरीवेयर इन बिहार आल्सो, as I shown a figure and later that figure verified by संतोष also, कि 99% जो दलित है उनके पास या तो लैंडलेस है या वो मार्जिनल लैंड ऑनर है। तो और वही एक वो रीजन है कि वो वेज वर्क पे डिपेंड करते हैं। तो वेज वर्क या तो उनको बिहार में मिले या बिहार के बाहर मिले। और अगर हम माइग्रेशन का पैटर्न देखेंगे, मेरे पास फिगर नहीं है उसके, प्रोबब्ली मनीष उस पर कुछ बोल पाए, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन जो है, ठीक है ना, उस ऑब्जर्वेशन में मैं यही कह सकता हूँ कि यस कि माइग्रेशन जो दलितों में है वो ज्यादा है। और आई थिंक जो इनिशियल माइग्रेशन स्टार्ट हुआ था बिहार से, यानी इट वाज द दलित हु स्टार्टेड माइग्रेटिंग एंड लेटर दैट लीड टू द कास्ट वार एंड समथिंग बिकॉज ऑफ दैट माइग्रेशन। तो ऑफकोर्स माइग्रेशन है, क्योंकि दलितों को ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी बाहर मिलती है, ठीक है ना। बाहर अपने को एक तरह से अपने कास्ट जो आइडेंटिटी है उसको भी हाइड करने में अप टू सर्टेन एक्सटेंट वो सक्सेस हो जाते हैं, एंड दैट अफेक्ट देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी कहना गलत यूज होगा, बट देयर अफेक्ट द इकोनॉमिक इंडिकेटर। सो वो तो दलितों में है माइग्रेशन में, और ज़्यादा माइग्रेशन है कंपेयर टू द अदर कैटेगरी। ज़्यादा शायद मनीष बता पाएँ। दैट्स मच। Thank you. Very brief and very precise. So, Manish? मेरे ख्याल से अपने अपने एरिया में लोग जवाब दें तो ज्यादा अच्छा। हाँ, मनीष माइग्रेशन पर बोल सकते हैं। Am I audible now? My internet connection is pretty unstable, so I don't know. Anyways, the last question that was asked that was related to how do we see the migration rate of Dalit if we compare that with the overall migration rate from Bihar. So basically, as Krishna sir has rightly pointed out, land ownership is very much connected with the rate of migration of any social communities. And that's why the rate of migration is actually very high when you compare Dalit versus non-Dalit. So the rate of the migration is very high for Dalit because they do not have that livelihood condition available in the state. That's why they are moving out to work. That is one thing. But the second question, which is very prominent, and that should be the more interesting question, that what kind of work they are doing
after migrating. So that is very interesting thing. So in most of the cases, we are fortunate to have census data with us, because census data at least provides SCST and aggregate figure separately. So from that, you would see the composition of work that they are doing, or the region of migration that they are suggesting, Dalit are suggesting. So in case of Dalit, mostly they are moving out for work, but some surveys such as NSS, they do reflect that Dalit communities are going and working at subsistence level. So even after migration, their main purpose is survival, and they are getting a wage which is not very high. So that is a prominent question, and that should be investigated further. I do not have a conclusive answer for that, but I would say, suggest that this is very much connected with what Krishna sir has already pointed out. The second question is related to agrarian crisis and the model that should be adopted in Bihar, such as industrialization of food-led or agriculture-led industrialization. So it is true, whenever you ask any person, at least in the mainstream economics, that what is the reason behind agrarian crisis, the simple answer that you would get is productivity. So my supervisor, and who is professor of all of us, all panelists here, including the convener of this panel. So he generally suggests that this kind of explanation, which puts productivity at the center of this explanation of agrarian crisis, this explanation is technocratic explanation. And this is very absurd kind of explanation. So you cannot summarize agrarian crisis in any part of the globe just on the productivity or any kind of technocratic explanation. So the obvious question that arises after this explanation of productivity as answer of this agrarian crisis, then one should certainly ask why farmers are not adopting the modern techniques available in the cultivation. When you ask that question, then obviously they are not willing, this kind of answer you would get. They are not willing to invest, or they do not have ability to reinvest in the agriculture. So somehow these all things are very much connected with the earning that they are making. That is, their dependence on agriculture is such that they are deriving something from agriculture, but they are not getting surplus. The surplus which is generated by agriculture is actually very much appropriated by outward, forward and backward linkages. They are appropriated by those who are involved in the fertilizer kind of business. Santosh has very good paper on that. Then on the forward linkages, obviously those who are procurer, they are getting surplus, and the farmers are not realizing adequate price of their commodity. A very good paper by Avninder sir on the same issue. So on the backward side and on the forward side, Krishna sir was talking about the land relation. So a significant portion of surplus which is generated in agriculture, including in Bihar, is very much appropriated by those who are owner of the land. And I think Avdesh sir was talking about land tenancy in Bihar. So tenancy is one kind of reflection where you have clear information, at least in case of Bihar, that a significant portion which is generated in agriculture by farmers who are putting their labor power in production, that surplus is actually appropriated by landowner, those who are traders in the business. So these are the basic regions that we need to improve. So then when we come to the solution, I may not be clear during my presentation that we need to focus more on food or industry, which is very much connected with the agriculture. So that is true to some extent, but obviously given the nature of agrarian crisis that we are witnessing in Bihar, that requires a special kind of intervention. Even we are focusing on agrarian agricultural-led industrialization. That cannot be simply that Adani or any other big industrialist is coming in Bihar and investing and appropriating surplus which is generated by farmers. So actually they should be connected. Farmers should be connected in a cooperative system or some other kind of system where they can be master of the surplus which they are generating, so that they are getting the price which is actually correct price of the produce that they are producing.
So if we are focusing on such models, if we are focusing on some kind of models where government is intervening to empower the farmers, the example that Pradeep sir gave related to Chanpatia model, that model is very much related to that only, where you are empowering workforce to generate surplus and they have command over the surplus. That is not the case that somebody else is appropriating. Even in that case, there would be some appropriation of surplus. Obviously, without that, economy cannot run or the capital accumulation cannot happen. But in that case, their survival is not at stake. They are also getting some extra apart from their own consumption or subsistence. That may be very helpful for their own livelihood. So in that case, especially in case of Chanpatia like model, where government is skilling some worker who are returned migrants, and then they are setting up some kind of industry there, then those workers are very much connected in a certain kind of value system of textile, where workers are getting orders and paid on a regular basis. So those kind of things, that is very much required in case of Bihar. And since Bihar is very much agriculture dependent, such model can also be adopted in case of agriculture, where for agricultural produce, farmers can get adequate price, which can actually help them to hold on some of the surplus which they are generating. So through that, we can solve this crisis, and that can certainly possible when that is also providing some kind of employment. If you are just displacing workers through some kind of industrialization, then obviously you are not going to realize the desired output that we are focusing on. So I think the solution is very much in front of us. We just need to focus on the implementation. How do we are approaching this kind of crisis? Okay. Thank you, Manish. Very precise, Santosh. फिर से आखिरी नंबर एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ. So as you said, like, you asked how do you think land reform can be done? So this is basically political question. No. One part is economic, whether it's a feasible, Yeah, of course. Because like, it happens. Yes. That is basically the political class has to do. But as far as I am concerned, I think it is possible. Is some or other way. There is मेरा 2-3 रीजन है. एक तो एक तरह से कलेक्टिव फॉर्मेशन किया जा सकता है, not farmers producers organization what the government is doing. Do we still have that much surplus land? My question is that. हाँ, उसमें तो आपने कहा कि लैंड रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन लैंड रिकॉर्ड हो सकता है. और मैं जो सोचता हूँ जैसे एक काम किया जा सकता है कि there is rampant absentee landlordism. That must be recorded some or other way. अगर वो रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो that is always a possibility that at least some land that can be redistributed to the real tillers of land. ठीक है. Absentee landlordism is there, and then the next process is collectivization of land holdings that can come. But land record है ही नहीं. इवन एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का तो रिकॉर्ड कहीं नहीं है, किसी स्टेट में नहीं, और न तो कोई अब इस पर काम करना चाहता है. मैंने एक पेपर इस पे लिख के कम से कम 5-6 रिजेक्शन मैंने देखे हैं. ठीक है. तो वो, और उसमें एक, मैं जर्नल का नाम नहीं लूंगा, बहुत रिप्यूटेड है, उन्होंने लिख के कह दिया कि ये वाला सेक्शन आप हटा दीजिए, हम पब्लिश कर दें, जिसमें एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म और ये सब की बात की गई. तो अच्छा, दूसरा जो अवधेश ने कहा कि बटाईदारों के पास खेत चला गया है. सो अवधेश जी, जैसे ही मान लीजिए पीएम किसान है, अगर शेयर क्रॉपर्स के पास वो खेत जा रहा है तो उसका बेनिफिट उनको कभी नहीं मिलेगा. 6,000 जो मिल रहा है, अगर हम पॉलिसी की बात करें तो वीमेंस दे आर आउट ऑफ दैट, है ही नहीं, उनके ऊपर हमने डिस्कशन ही नहीं किया. ठीक है. तो एक दूसरा है जो अभी मैं देख रहा हूं बिहार में या इवन यूपी में भी, कि रिवर्स टेनेंसी दैट इज बिकमिंग रैम्पेंट, कि जिनके पास बहुत ज्यादा खेत है वही लोग छोटे छोटे जो लैंड होल्डर्स हैं उनका खेत लेके खेती कर रहे हैं. ठीक है. दैट इज
like reverse tenancy has become a fashion. सर मेरा ये नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं, मेरा ये बात नहीं, मैंने क्वेश्चन नहीं किया, तो मैंने वो बात बताया। मैंने ये कहा था कि सर जो भी लैंड है, लैंड ओनर के पास लैंड है, तो जो कल्टीवेशन करना, जो टीनेंट है, वो ऑलरेडी उनके पास लैंड है नहीं, लेकिन खेती जो पूरे गांव का कर रहा है, पूरे रूरल एरिया का कर रहा है, जो कि लैंड ओनर के पास खेत था, अभी भी है, वो खेत बटेदार कर रहे हैं, तो उसमें काउंट है ही नहीं, उनके पास अपना लैंड है। हाँ, तो इसलिए मैंने वो PM जिक्र किया 6000 एब्सेंटी वाले जो, लैंडलॉर्डिज्म का। जी जी, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म और बहुत ज्यादा है, जहां से खेत लिए जा सकते हैं, और वो, बट दैट इज अ बिगर पॉलिटिकल क्वेश्चन अगेन, कि एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म जो है उससे खेत कैसे लिया जाएगा। सरकारें बचेंगी नहीं, साफ हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, बिहार में खासकर। हाँ, कहीं भी किसी भी स्टेट में एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म पे आप अटैक कीजिए, कोई भी सरकार हिम्मत नहीं है आज की डेट में कि कर ले। अच्छा, तीसरा जो चनपतिया क्लस्टर वाला बात किया प्रदीप सर ने, वहां मैंने एक सर्वे किया और वो पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड है। तो वहां स्थिति ये है कि सरकार ने सिर्फ जमीन प्रोवाइड कर दिया है, मतलब एक वो FCI का गोडाउन था जो खाली था, वहां कुछ नहीं हो रहा था, उसको दे दिया है। दे आर प्राइवेट इन्वेस्टर्स। सरकार ने उस बीच में जैसे गरीब कल्याण योजना के तहत, जो GKY के तहत कुछ जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स कोरोना के टाइम लेके आए थे, उसमें उन लोगों को मशीन खरीदने के लिए लोन दे दिया। यहाँ के वो प्रशासन के द्वारा कुछ लोगों को जो लौट के आए थे आसपास के एरिया से, जो बेसिकली टेलरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, उनको आइडेंटिफाई किया और उनको जो है वहां पे लगा दिया। लेकिन देयर इज नो अदर गवर्नमेंट सपोर्ट एक्सेप्ट द प्लेस, कि सरकार ने वो लैंड प्रोवाइड कर दिया, मशीनें प्राइवेट हैं, इन्वेस्टर्स प्राइवेट हैं, और जो वहां पे काम कर रहे हैं जो लोग, वो दे आर बेसिकली पीस रेट वर्कर्स, कि आप इतने कपड़े सिलिए और आपको इतना रुपया मिल जाएगा। जैसे जो साड़ियों पे स्टोन्स लगाती हैं महिलाएं, कि साड़ियों में आप देखेंगे स्टोन्स होता है, तो 100 स्टोन्स पुट करने का, रखने का साड़ियों पे सिर्फ 10 रुपया मिलता है, ओनली 10 रुपीज। और वो इतना वो होता है, नजदीक से ऐसे करते हैं कि वो आंख खराब, मतलब आंख की रोशनी पे असर पड़ सकता है। So my point is, unless government is directly involved into something, वो बहुत दिन तक सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि they need continuous help from the government। क्योंकि वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ के जो वर्कर्स हैं, उन लोगों ने जो बताया, वो एक दिन मैं, अगर आप कहेंगे तो वो मैं फाइंडिंग्स यहाँ भी शो कर सकता हूँ, कि इस तरह का उन्होंने, मतलब एक, ठीक है, वो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज मनीष वाज सेइंग, दैट such kind of activities should be promoted by the government, but with more fund or more allocation towards that sector. Thank you. So my submission is over. थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो मुझे लगता है कि कंक्लूड करने की जरूरत नहीं, जिस तरह से क्वेश्चन आंसर में चीजें कंक्लूड हुई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बस एक लाइन में माइग्रेशन पे बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से, हालांकि मैंने छोड़ दिया है माइग्रेशन में काम करना अभी, बट एक दो चीजें जो दलित और माइग्रेशन का लिंकेज है। माफ कीजिएगा, मैं विजय चौधरी हूँ। मैं बस एक सेंटेंस में, ये जो दोनों पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर कृष्णा और डॉक्टर मनीष, दोनों ने दलित का जो डेटा, दलित के बारे में कि बिहार से दलित का क्या कंपैरिजन है माइग्रेशन का, तो मुझे लगा कि ओवरऑल जो एक जनरल सिचुएशन है, डायनेमिक्स है दलित का, उसके आधार पे कहा। मेरी जिज्ञासा थी कि क्या कोई स्टडी हुआ है इसका, और क्या कोई डेटा इस तरह का है कि नहीं है, कि मतलब कि क्या परसेंटेज है, कि हम लोग अस्यूम कर रहे हैं कि दलित जो हैं वो लोएस्ट हैं पूरे सिचुएशन में, तो उन्हीं का सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता होगा। ये हम जानना चाहते हैं, कोई सब्सटैंसिव स्टडी या डेटा इस पे है कि नहीं। दूसरा, हालांकि ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं चाहूंगा कि इस पर फिर कहीं चर्चा हो, कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस पे तो रिफ्लेक्शंस हुए हैं, लेकिन वो पॉइंटेड कोई बात उस पे नहीं हुई है। और जो बहुत कॉमन रेफरेन है और बहुत पॉलिटिकल क्वेश्चन है, सेंटर का जो रोल है बिहार को लेकर के, तो उस पर हम आपका चाहेंगे, चूंकि अब आप मॉडरेट कर रहे हैं, अगर आप रिफ्लेक्ट
कीजिए, हालांकि बहुत बड़ा सवाल है और डिफरेंट रिल्म का है, लेकिन है बहुत सब्सटेंशियल सवाल है। तो इस पे ये 2 मेरे कमेंट्स हैं। थैंक यू। अच्छा, ये जहां तक डेटा का सवाल है, ये सेंसस 2011 का जो डेटा है उससे आपको बिल्कुल ये मिल जाएगा कि कितना प्रोपोर्शन माइग्रेंट जो टोटल हैं उसमें किस SC ST और बाकी उसका प्रोपोर्शन आपको वहां से मिल सकता है। तो डेटा इसमें अवेलेबल है। डेटा क्योंकि अभी सामने में नहीं है तो एग्जैक्ट फिगर आपको मैं इसलिए वजह से नहीं बता सकता। नहीं, उस डेटा डेटा के आधार पर अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही है, तो उसको हाँ, लोग देख डेटा मुझे लगता है कि जितने भी प्रेजेंटेशंस में जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया यहाँ पर मोस्टली डेटा ड्रिवन था, और ज्यादातर जो सभी डेटा जो है वो गवर्नमेंट वेबसाइट के डेटा थे। और एक चीज मैं जस्ट दलित के बारे में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मेरे सर्वे में भी था एमफिल में वो पॉइंट कि मुझे लगता है कि 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है माइग्रेशन के लिए। पहला है एक थ्रेशोल्ड इनकम, कि आपको अगर एक लेवल से ज्यादा इनकम नहीं है तो भी आप माइग्रेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात नेटवर्क, उसका भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तीसरा जो है मुझे लगता है कि जो परसेप्शन है आपका कि आप क्या करेंगे वहां जाकर, जैसे क्या आपको मिलेगा। तीनों चीजों में दलित हिस्टोरिकली बहुत पॉजिटिवली प्लेस्ड नहीं थे, क्योंकि उनके पास ना तो उतना थ्रेशोल्ड इनकम था कि वो बहुत आसानी से चले जाए, ना उनके पास नेटवर्क था पहले का, और ना ही उनके पास ये एक्सपेक्टेशन था कि वो अगर जाएंगे, बिकॉज अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस में थी, तो ये भी उनके लिए बहुत आसान नहीं था कि वो मूव करेंगे, उनको एक्सक्लूजन नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि, लेकिन इसलिए अगर कंपेयर करें लंबे समय में, आपको पता चलेगा कि शुरुआती फेज में ओबीसी माइग्रेशन ज्यादा था। क्योंकि मैंने एमफिल मेरा माइग्रेशन पे था, तो आई वर्कड ऑन दैट डेटा, दैट सीरीज ऑफ डेटा। तो शुरुआती फेज में ओबीसी का माइग्रेशन ज्यादा था। इसका रीजन ये नहीं था कि दलित वाज रिलेटिवली बेटर, बल्कि वो इनकी हालत इतनी थी कि वो माइग्रेट करने के लायक भी नहीं थे। तो ग्रेजुअली एक चीज ये हुआ, अर्बनाइजेशन के थ्रू दैट लिंकेजेस वो क्रिएट हुआ, और जब ये पॉसिबिलिटीज आई तो दलित का माइग्रेशन काफी ज्यादा है। और 2011 में भी है क्लियरली, दैट राइज इज क्लियरली देयर। 2007 जो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लास्ट डेटा है माइग्रेशन पे डिटेल, उसमें भी वो राइज क्लियरली विटनेस्ड है। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है दलित के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि अभी भी जैसे मनीष ने कहा, मैं उसको लिंक करता हूं, अभी भी अगर वो लोग मूव कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये जहां पर प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है वहां भी उनका एक्सक्लूजन जो है वो काफी एविडेंट है। तो ये सारी चीजें एक साथ है ऐसा। और डेफिनेटली अगर आप ओवरऑल माइग्रेशन इंडिया में देखेंगे, इंटरनल माइग्रेशन, इट्स विद इन द इनफॉर्मल सेक्टर। सो कैजुअल वेज अर्नर से कैजुअल वेज अर्नर, विदाउट एनी सोशल सिक्योरिटी टू विदाउट एनी सोशल सिक्योरिटी। सो इस तरह के पूरे सेगमेंट में माइग्रेशन का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रह रहा है। और दूसरी बात मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट के रोल के बारे में बात कही है, मुझे लगता है कि इतने कम टाइम में इस पर कुछ भी कहना अभी बहुत डिफिकल्ट होगा। सेंटर, चाहे वो रिलेशन सेंटर से स्टेट का हो, अब मुझे बहुत डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है चीजों में। अगर हिस्टोरिकली देखें तो एग्रीकल्चर इज डिस्क्रिमिनेटेड, हैज बीन डिस्क्रिमिनेटेड फॉर लॉन्ग, for variety of reasons. So political economy में difference, it's a larger debate. So maybe मुझे नहीं लगता है कि ये समय उतना है कि हम लोग उस political economy के डिबेट में जाएं। मे बी प्रदीप जी कभी अगर और ऑर्गेनाइज करेंगे तो कई लोग फिर एक पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज करेंगे इसके लिए। सो पॉलिटिकल इकोनॉमी पे हम लोग कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, बिहार के साथ लिंक करके कर सकते हैं, दैट्स अ लार्जर पार्ट, बट मे बी। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। आप तीनों प्रेजेंटर्स इतने डिसिप्लिन बहुत कम दिखे हैं, तो मैं प्रदीप जी को हैंड ओवर करता हूं। धन्यवाद सब लोगों को इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए। और मेरा लालच इतना बढ़ गया है कि मुझे लग रहा है कि बाकी सभी थीम्स को छोड़ करके यदि हम हर एक महीना एक इस तरह का यदि पैनल डिस्कशन कर लें तो बहुत ही रिच होगा, और बिहार का जो पॉलिसी डिबेट है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। कुछ बातें हम लोग सेमिनार वेबिनार खत्म होने के बाद भी करेंगे। पर बहुत बहुत धन्यवाद सभी युवा शोधार्थियों को बिहार के विकास में अपना योगदान देने के लिए। रिसर्च के माध्यम से योगदान देना, यही ज्ञानोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने काफी मैराथन सेमिनार वेबिनार किया है, और इसीलिए अगले कुछ दिनों तक हो सकता है 1 महीने के लिए हम लोग ब्रेक लेंगे, और इस दौरान हम लोग नवंबर के महीने में जो हमारा ज्ञानोत्सव फंक्शन होता है जो ऑफलाइन होगा, उसकी तैयारी भी करेंगे। कॉल ऑफ
कॉल फॉर पेपर जारी करेंगे। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी तैयारी में सहयोग कीजिए और वहां आइए। वहां एक जगह जुटना भी बहुत जरूरी होता है, एक दूसरे से मुखातिब होना भी बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद सब लोगों को आज आने के लिए। धन्यवाद।